Anyone can join foodpanda, yes. We would want everyone to join, but of course there's a process. Pakistan is one market जहाँ पर rejection at doorstep is one of the highest. We have to ensure the rider's safety and we ask them to drive slow. There can be 804 possible reasons why something can go wrong in an order. 804. Rider wait कर रहा है बाहर तो खाना लेट हो रहा है तो हमारा customer भी सफ़र कर रहा है. Food tech business becomes optimized for delivery as well. तो मैं छोटा होता था तो एक ज़माने में डोमिनोज खुला था, तो डोमिनोज की वो बड़ी फेमस चीज़ थी 30 मिनट्स या फ्री, एंड आई लव्ड दैट. और वो हमेशा somehow ना पहुंच जाता था, एंड आई रियली पिस्ड ऑफ हैविंग टू पे हिम. हमारा गोल भी यही होता है. बाय लार्ज हम जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उसी के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं. वी हैव डन दैट बाय फिक्सिंग एवरीथिंग फ्रॉम एन ऑर्डर एक्सेप्टेंस टू ऑर्डर प्रिपरेशन टू द राइडर गोइंग टू द रेस्टोरेंट लोकेशन एंड देन फ्रॉम रेस्टोरेंट लोकेशन टू कस्टमर लोकेशन. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे साथ the head of customer operations from foodpanda, Faisal Ahmed Jafri साहब हैं. Thank you so much for being on the podcast. Thank you for inviting me. अच्छा, तो सर आप वो हैं जो कस्टमर ऑपरेशंस और ये सारे मसले मसाइल हल करते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना जब टाइम पे नहीं आता और जो इस तरह की चीज़ें. दिस इज़ ऑल योर डोमेन. This is my domain, thanks to my team which handles that. अच्छा, तो सर let's get into this and try to debunk or demystify a lot of the problems. अच्छा, अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. मैं I-8 में रहता हूँ या सम सेक्टर में रहता हूँ और मेरे पास वो रेस्टोरेंट नहीं आता. क्यों नहीं आता? So देखिए, for foodpanda, what's the most important thing is how do we maintain a consistent customer experience wherever you are in any part of the city or any part of the country. And the most important thing, how do we maintain a consistent experience is कि हम customers को एक इतने टाइम में खाना डिलीवर कर दें जिसमें उनका एक वाव एक्सपीरियंस हो. उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें एक सर्टेन रेडियस में ऑपरेट करना पड़ता है विच जनरली इज़ अबाउट बिटवीन 5.5 किलोमीटर्स. सो आप जिस लोकेशन पे मौजूद हैं, आप I-8 में हैं, अब टेक्निकली I-8 में शायद इतनी ऑप्शंस ना हो जितनी आपको F10 में अगर आप रहते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलेंगी. सो अगर आप जिस एरिया में मौजूद हैं, अगर आपके पास रेस्टोरेंट डेंसिटी उस एरिया में ज़्यादा है विद इन दैट स्टिपुलेटेड रेडियस, यू आर गोइंग टू सी मोर ऑप्शंस. बट इफ़ यू आर इन अ लोकेशन वेयर बाय ओवरऑल द नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स आर लेसर एंड द ऑप्शंस आर लेसर बिकॉज वी डोंट हैव जस्ट रेस्टोरेंट, वी हैव शॉप्स एंड अदर. Of course. So if the options in that particular area are more, then you will see more options. And if it is too far away from your location, so for example, अगर मैं जो हूँ वो कुछ चीज़ मंगवाना चाहता हूँ गौरी टाउन में और मैं अभी 11 में हूँ right now, it's not possible because they are two ends of the city, right? So because खाना ठंडा हो जाता है. So इसमें दो तीन चीज़ें. एक तो ये कि वी वांट टू मेंटेन द कस्टमर एक्सपीरियंस. खाना ठंडा हो जाता है, अगर आपने कोई आइसक्रीम मंगवाई वो ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएगी अगर वो 1 घंटे का ट्रैवल टाइम करेगा. एंड ऑल्सो वी वांट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ आवर राइडर्स एज वेल बिकॉज वी वांट टू मेंटेन a situation in such a way that they work in a time whereby they're able to earn more money as well. So we safeguard the interest of the customers. We want that जो हमारे vendors या हमारे restaurants जो food बना रहे हैं वो piping hot situation में customer को मिले, वो vendors को वापस से reorder करें, हमारे rider को अच्छा rate करें, platform को अच्छा rate करें, wow experience उनको मिले. And this is done basically to safeguard all the stakeholders' interest. अच्छा, what about packaging? मुझे खाना मिलता है यार कभी कभार, सूप मिल रहा है शॉपर के अंदर या कोई इस तरह की चीज़ that I don't like, या sometimes I'm getting like fantastic. Is that on the restaurant or is that on foodpanda? And do you advise restaurants कि यार आपको खाना इस तरह भेजना चाहिए? For example, कॉफ़ी डिलीवर हो रही है तो उसको किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए? What's that relationship like? So whenever we onboard a restaurant, एक guiding principle उनको how they should operate and how they can improve and increase their revenues इस हवाले से हम उनको देते हैं. So packaging is one of the most important thing because food delivery में packaging is basically a cherry on the top. If good packaging is there, customer experience many folds increase हो जाते हैं. तो उसमें हम उनको ज़रूर गाइड करते हैं, हम उनको बताते हैं. वी हैव मैनी ऑप्शंस ऑन द प्लेटफॉर्म जो पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. मैनी कॉफ़ी डिलीवरी रेस्टोरेंट्स और डिज़र्ट ऑप्शंस दे फोकस अ लॉट ऑन द पैकेजिंग. एंड दोज हु डोंट देन दे एक्चुअली सफ़र इन द सेंस दैट उनके पास स्पिलिश केसेस आते हैं. फिर कस्टमर्स भी वेरी स्मार्ट इनफ, दे ऑल्सो नो दैट if I'm going to order from this option then the likelihood of something getting spilled
is a little more as opposed to this, because वो जो है वो बहुत अच्छा रैप करके और प्लास्टिक रैपिंग करके देते हैं. उसकी अकाउंटेबिलिटी हम अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ भी ऐसे बिल्ड करते हैं दैट वी इनकरेज आर कस्टमर्स टू रेट एवरी ऑर्डर वंस इट हैज़ बीन डिलीवर्ड. सो रेटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और उस पर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट वाई डिड यू लाइक समथिंग और वाई डिड यू नॉट लाइक समथिंग. और अगर if the restaurant gets a bad review, do you take them off foodpanda? We have strong restaurant compliance framework as well. So we work with them. हमारे threshold set हैं कि इस rating पे क्या action होगा, इस अगर कोई specific ऐसा incident आ जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा. So this is something that we work very closely with them because the ultimately goal is कि हर restaurant की rating improve हो, because the ratings का और reorder rate का किसी भी restaurant का बहुत close relationship होता है. So the higher the ratings you have, basically customers are aided and guided that this restaurant is a better option to order from. And then उससे फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस तो बेहतर होता ही है, लेकिन उस रेस्टोरेंट को ज़्यादा बिजनेस पे मिलना शुरू भी हो जाता है. सो इसलिए रेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. And can anyone, so let's say मेरे पास रेस्टोरेंट अभी मैंने खोला हुआ भी नहीं है, कुछ whatever mom and pop shop है, can anyone join foodpanda? Is there a process to join? How difficult is it to join as a restaurant? So anyone can join foodpanda. Yes, we would want everyone to join, but of course there's a process to it. So हमारी जो है restaurant acquisition teams होती हैं. We work with the restaurant. There are online forms available. A home chef is a primary example whereby home-based women they sign up and then they start earning. So our things are there on our website. You just sign up. We will get in touch with you. We'll visit you. We'll see. We will have terms of engagements with you set, and after that orders will start flowing into your foodpanda tab. And now since we're talking about restaurants, I don't know if it's a myth, if it's reality, restaurant owners काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि लूट रहे हैं हमें foodpanda वाले, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, सारा पैसा foodpanda बना रही है, हम तो बेचारे लाइट ऑन करने के पैसे नहीं हैं. Is that true? And what are your thoughts on it? अच्छा देखिए, सो इसका ना थोड़ा सा लार्जर व्यू में देखते हैं. अगर आपके कोई रेस्टोरेंट ओनर्स को रिव्यूज़ दे रहे हैं या कस्टमर्स को रिव्यूज़ दे रहे हैं, दे माइट बी, तो वो बेसिकली उनका अपना personal opinion होता है. But if let's look at the larger scope of things, foodpanda is growing. We are increasing our number of orders every month on month, year on year. We are increasing our riders. Restaurants want to sign up. Whenever आप किसी भी restaurant owner से आप बात करें, the very first thing after he wants to basically, after अपनी establishment set कर ली, he would want to sign up at foodpanda because he knows that the number of orders that flow in once he sign ups on foodpanda are going to be tremendous. On safely अगर I would say कि 50-50 का ratio होगा dine in and foodpanda via foodpanda delivery के through. So जो smart restaurant owners होंगे who understand the business, I'm sure they are very happy with foodpanda. I don't want to name a chain, लेकिन कराची में एक बहुत बड़ा brand है. Literally they signed up with us and now they have become a very very big name. So because they knew how to work with us, how to grow, and we helped them as well. So I would advise all those restaurant owners that if they face difficulty in sort of they feel that we are sort of not being justful with them, they should have they can review their operations, and we are always there. हमारे जो key account managers होते हैं, they are working with the restaurants to tell them how they can grow and improve their business. So मैं एक चीज़ पे ज़रूर emphasize करूँगा कि जो anecdotal evidences होते हैं वो of course जो है ना वो होते हैं एक बंदे का ओपिनियन जिसकी बेसिस पे शायद बाकी लोग ओपिनियन बना लेते हैं. बट फॉर foodpanda, which is an international company, we are here in the long run and we are a going concern. So we exist to satisfy every stakeholder, चाहे वो हमारे राइडर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं और हमारे रेस्टोरेंट्स हैं. I mean, we can't grow. We would have not been sustainable. हमने जिस सिचुएशन में 2019, 20, 21, 22 और 23 में जो हमने मल्टीपल फेजेस देखे हैं हाइपर ग्रोथ का और फिर अभी करंट सिचुएशन, वी वुड हैव नॉट बीन दिस स्टेबल एंड वी वुड हैव नॉट ग्रोन दिस वे इफ़ वी वर नॉट जस्टफुल to our all stakeholders. And आपको कभी कभार ऐसे लगता है, for example, I was talking to some restaurant owners and they were saying यही कि बहुत ज़्यादा कमीशन ये वो foodpanda. I was asking them, people look at foodpanda as a food delivery platform, ठीक है. What they don't realize is it's the biggest advertising network for food in the country. अगर आप foodpanda पे मौजूद हैं, your XYZ new burger joint, and I see you on foodpanda, I will order. There's a good chance I'm hungry, that's why I opened the app, right? When I'll order, I'll like it, then I'll tell my friends about it, then they'll order, then they might even go to the restaurant. So there's an intangible value जिसकी I feel like
लोगों को समझ ही नहीं आती या मे बी समझ आती है लेकिन दे डोंट रिस्पेक्ट दैट वैल्यू कि बिफोर फूड पैंडा XYZ बर्गर वेयरएवर राइट, शायद आप कभी सुनते ही नहीं उसका, शायद आप कभी विजिट ही ना करते अगर आपके मोहल्ले में ना होता या अगर आपने कभी सुना ना होता. Restaurants have a much, especially fast food, has a much larger scope of success just because, and they can have cloud kitchens now, they can have all sorts of systems, and this is all because of the delivery network and the platform, right? So the platform is able, even on Pandamart, right? There's so many things that I can order now that maybe I wouldn't have ordered before because I don't know they exist, right? एक दुनिया बनती है, लेकिन उसी दुनिया के साथ you're becoming the super app that you sort of want to be. Is that necessarily a bad thing? I mean, if everyone of the stakeholders is benefiting from it and you know, we as consumers are benefiting from it, so what's the problem? Is that a bad thing? Our customers trust us, which means that our restaurant owners and the restaurant trust us, and then the riders also, we are safeguarding the overall economics And that's of a the very rider big base. part, yeah. Yeah, because the rider base, as I said earlier, is growing. The customers are coming every day. They still want to sign up. We are still acquiring new customers. We are still acquiring new restaurants. और जो आपने बात की कि yes, the restaurants get a lot of visibility and options once they sign up with us, but at the same time we are also safeguarding the customer's interest as well, such that if it's a new option that you tried and you were not happy with the food quality, let's say, so all you need is to connect a chat and you can provide us the picture of the food, and within 5 to 7 minutes you would get a full refund or whatever you ordered. And that is something that is, I don't think so that any other tech player in the Pakistani market right now offers. For example, अगर आप जो है किसी और marketplace से आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, they would, and you want to file a complaint that you had a problem, it would take easily 7 to 10 days for you to get that issue resolved. Probably. Yeah. I'm talking with my own examples and also learning what happens in the industry. So while we're giving visibility and business to the restaurants, we at the same time are taking care of the customer's interest as well. Similarly, अगर आप किसी नई option पे जाके आप try करते हैं, I think the probability of you asking for a refund if you found the food quality to be poor is going to be very less. But at foodpanda, the customers have the liberty and they have this right to come up and say that, you know, we use the power of your platform to order this and we feel that the food is not good. And if they convince us by providing the relevant evidences and we review their version and a few other checks. How long does that take? It takes not more than 7 minutes. ठीक है, 7 minutes? Yeah, 7 minutes. Wow. So exactly 7 minutes. फिर क्या फ्री खाने देते हैं? Sorry? फिर क्या होता है? What do I get? And उसके बाद आपने जितने पैसे दिए, let's say आपने 1000 रुपए का कोई पिज़्ज़ा मंगवाया था and you found that the pizza was stale, you would get that money straight away after 7 minutes in your PandaPay wallet. Now you use it again to reorder something from foodpanda and you still have an option that आप जो हैं वो अपने source पे पैसे वापस transfer कर दें if you want to do that. So which tech player right now is so efficient in terms of providing refunds, which is foodpanda? Apart from foodpanda, I don't see any other player in the market right now. So this is where we safeguard the interest of everyone, and also from the rider side of things, अगर मैं interest की मैं उनके safeguard करने की बात करूँ, we have an option that the riders also rate the restaurants. So for example, बदतमीजी कर रहे हैं कुछ. So then we take actions against that restaurant as well. First, of course, there is engagement and there is expression of concern कि हमें ये feedback मिला and all that. And if it does not change, then we are going to take any punitive measures against that particular option. अच्छा, अब मुझे बताएं, can I as a customer get banned from foodpanda अगर मैं पता नहीं बदतमीज हूँ, पैसे ना दूँ, ये वो, did you blacklist customers? So देखिए, उसमें हम blacklist नहीं करते, लेकिन what happens is that if a customer has a repeated record of basically, you know, not being honest with foodpanda as a company in terms of back-to-back rejection at doorsteps, for example, or in terms of being extremely abusive sort of with our riders, then we put some further checks on those customers. Okay. Which means that, for example, we would say that from today onwards, we might not allow you to use cash, but we will ask you to please
do a prepay orders. ठीक है. But other than that, because this is only to safeguard the interest. Of course, and it should be done. And because Pakistan is one market जहाँ पर rejection at doorstep is one of the highest. Yes. And still but we still allow food delivery because. वैसे what do you do then? मतलब मैंने 10,000 का ऑर्डर किया, वैसे तो आई थिंक उस पर तो कार्ड हो जाता है, लेकिन चलो मैंने ऑर्डर किया जो भी ऑर्डर किया और रिजेक्ट कर दिया अपने डोर स्टेप पे, एज इन मैंने कहा है मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया. Do you pay the customer, as in the restaurant in that case? Who pays the restaurant? Percentage आप मुझे दे सकते हैं? How often that happens? What sort of like out of say 100 orders. So understand how that business works. Traditionally, you walk into a restaurant and your invoice is locked after you have consumed and eaten the food. In foodpanda business, the invoice is locked the moment you place an order, and then we request the restaurant or the shop, for that matter, to prepare this order on the behalf of our customer because we are requesting to do so. So now if something goes wrong, we have to safeguard the interest of our partners as well, which is, इसमें आप देखें अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है, हमारा जो राइडर है उसका फ्यूल ज़ाया हुआ, वो डोर स्टेप तक गया कस्टमर के, उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हुए. रिमेंबर द बिगेस्ट थिंग मोर देन द फ्यूल इज बेसिकली द आवर्स दैट द राइडर इज स्पेंडिंग, बिकॉज एवरी आवर और एवरी मिनट दैट द राइडर इज स्पेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ही वांट्स टू अर्न मनी बिकॉज इट्स अ फ्रीलांस मॉडल. दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, सो दे वांट टू स्पेंड मोर आवर्स एंड अर्न लेस आवर्स एंड अर्न मोर प्राइमरली. सो एक तो राइडर का ट्रिप ज़ाया हुआ, उसका फ्यूल ज़ाया हुआ, और कैंसिलेशन एकदम से नहीं होती. उसमें भी हम बहुत दफ़ा हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर भी जो है ना वो कस्टमर को कॉल करता है, उनको रिक्वेस्ट करता है. इसलिए आई ऑल्सो वांट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू से टू ऑल आवर कस्टमर्स इज दैट whenever you get a call from foodpanda, please do pick it, because please listen to our concerns and what we want to say. Sometimes the customers, when they want to cancel an order, they go missing in action, they don't respond to our calls, but we want our customers to please listen to us, because there's a rider potentially outside at your gate who wants that order to be delivered, because any additional order that you will accept, that will add to his tally of successful orders, which will make him qualify for a bonus potentially. So एक तो ये चीज़ है. Secondly, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका फिर बिजनेस लॉस होता है, बिकॉज इट्स अ लॉस दैट हैपन्स आफ्टर एन ऑर्डर इज कैंसिल. उस लॉस को हम उस लेवल तक मिटिगेट करते हैं रेस्टोरेंट्स के साथ, एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द कॉस्ट वी बेयर इट. और कुछ फिर हम रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वी कंसिडर देम एज पार्टनर्स. सो देयर इज नो रिलेशनशिप दैट एज अ क्लाइंट रिलेशनशिप, वी कंसिडर देम एज पार्टनर्स. सो देयर इज अ significant chunk that we bear, and we ask the restaurant to bear some chunk of the loss that has happened if an order has been cancelled by the customer. Makes sense. और उसमें फिर अगर कस्टमर की अकाउंटेबिलिटी होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर बैक टू बैक केसेस होते हैं तो फिर हम उनको कैश पे प्रिवेंट करते हैं ऑर्डर्स प्लेस करने पे. और सर, यू टॉक्ड अबाउट द ऐप चैट, राइट? अक्सर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं. हम इतने टेक्स हैवी हैं नहीं पाकिस्तान में, थोड़ा सा हमें VIP कल्चर की भी आदत है, तो फिर हमें चैट में लिखना पड़ता है, फिर चैट वाला रिप्लाई नहीं कर रहा होता, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं. कोई वजह है इस चैट की, एंड व्हाट मेक्स इट the right approach for you guys? Okay, so first of all, तो VIP culture के लिए foodpanda ने एक ज़बरदस्त काम किया है, वो है पिकअप का हमारा vertical. What is a pickup vertical? You place an order, and after 5-10 minutes when the food is ready, you just go to that restaurant and pick that food. So this is one thing that we have done, you know, if you want to have a hassle-free thing. But jokes apart, I think fundamentally what I want our viewers to understand is कि foodpanda के दो aim हैं. We want to provide convenience and a quicker solution to our customers. And how do we do that? We will do that through the power of data that we do that. जो traditional voice based contact centers होते हैं उसके अंदर एक तो आपके पास वेट टाइम क्यूज़ का बहुत ज़्यादा होता है, हैंडलिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ अ सिंक्रोनस कॉन्वर्सेशन, विच मीन्स दैट एक टाइम के ऊपर अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो आप कोई और काम नहीं कर सकते. विद अस, what you can do is that you can be in your office, you can be in a meeting, but if you want to check the ETA of your order, you can connect a chat and you can keep on doing other things, and we'll give you a faster and a quicker solution. As I said, हमारा average chat time is in between 5 to 7 minutes. So within 5 minutes, you have not literally spoken, picked up a phone, anything like that. अपने laptop के through या अपने mobile के through आपने हमारा health center access किया. You get that query resolved, answered, and also once that chat has ended, we review every chat. Traditionally, जो हमारे traditional contact, so I'm not talking to a bot. You're not talking to a bot. You are just, ये वैसे बड़ी गलत फहमी है. Yes, the people think that you are talking to a bot. No, those names that you see of the people, they are not a bot. Those are real human
individuals who are Pakistanis who live in cities like Karachi, Lahore, or Islamabad, and and most of them, many of them are students or are doing something else. They are basically working with us. We are also providing. So another thing I want to tell is that while we are providing opportunities to riders, creating employment opportunity, earning opportunities for our riders and for home chefs, we have a very big customer support representative workforce as well. हम वहाँ भी opportunity of जो है ना वो provide कर रहे हैं उनके लिए earning opportunity. So those are all those people who are basically talking. And they are trying to resolve for your problem, and whatever they say, उसका सारा data recorded है हमारे पास. For voice, that data is not recorded, and you need to individually sort of listen to those voice calls in a traditional contact center. But for this chat-based contact center, for example, I can tell you कि कितने customers ने कल word पाकिस्तान use किया अपनी chat के अंदर, for example. कितने customers ने word पाकिस्तान use किया कराची के अंदर, कितने customers word ने पाकिस्तान use किया कराची में भी, DHA कराची के अंदर जो कि एक हमारा high demand zone है, for example. और वहाँ पर क्यों पाकिस्तान का word use किया, क्या रीज़न थी, दैट द रीज़न दैट द पावर ऑफ डेटा बेसिकली लेट्स अस नो कि हमें करना क्या है एंड व्हाट इज़ आवर कस्टमर आस्क. दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ वॉइस बेस्ड कॉन्टैक्ट सेंटर. सो एक तो सो क्विकर रेजोल्यूशन, फास्टर रेजोल्यूशन, asynchronous communication so that you can keep on doing other things, and also trying to understand the customer needs better in a quicker, efficient and scalable manner. That's the reason. However, we do call our customers if there is a need or a customer's request to do so. If you open our app and if you go to our help center, and there is a special option called safety concerns, and safety concerns can be that, for example, there's some serious issue with my food where I need help, for example, I need help with my card, or there's some misbehavior happening that I've detected. So if you just or use that option, within 15 minutes you are going to get a call from us. That's something that we monitor. So that's more about the fact that if there's a need to do so, we are there. आप कॉल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं that you want to speak to us, there's something critical, then you will definitely get a call from us. Also, I wanted to say that हमारा जो सेल्फ सर्विस हेल्प सेंटर है, या हमारा हेल्प सेंटर भी जो है, अगर आप किसी कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं तो वो इवॉल्व करता रहता है बेस्ड ऑन वेयर आर यू or where your order is in the journey. तो उसकी need की basis के ऊपर then we treat the customer. So for example, if an order is basically right on time and you're just 2 to 3 minutes away, then the response that you would get from us would be that your order is on the way, and please and there's no worry. So at that time we feel that there is not a need to contact the customer via call, and then our text-based message, we feel it's sufficient enough. However, when we understand that there's an urgency, the order has potentially gotten late, and I would love that I explain that why an order gets late, so I would please जरूर पूछिएगा इसके बाद. So उस वक्त जब urgency है और critical matter है, we are there. I will ask you that question, like in a little bit, because before I want to ask you another question. So there are these companies, Pakistan में भी एक है, obviously they've had some issues, but Affinity came up with a software which helped use AI. Yeah. Now this part is interesting, that I found interesting at least. Pairing the right person to the right call. Yeah. ठीक है. There's a show actually going around called Super Pumped. I don't know if you've seen it. It's Not about yet. Uber. Right? Okay. And the greatness of Uber, and when they showed that, I was like, I swear, मैं ये भी कहता था जब इंग्लैंड में नया Uber आया था, कि the greatness of Uber ना is I could see how far the driver was from me on a map. Yeah. That ना changed my life. Yeah. Because पहले भी बात में रेंट कार कंपनी होती मैं फ़ोन करता था, मसला ये आता था कि रेंट कार कंपनी आ भी जाती थी, टैक्सी आ भी जाती थी, लेकिन वो जो वेट था ना वो एंग्जाइटी देता था. एंड दैट स्टूपिड लिटिल GPS पे गाड़ी आ रही है ना, somehow give me assurances psychologically more than anything else, right? मार्केटिंग कह लें आप, जो भी आपने इसका कहना है, उसी तरीके से ना it's so simple but so intelligent जो TRG IBEX Affinity ने किया था with pairing the right person to the right call, right? A company as large as you guys must be working on technological advancements, whether that's AI or, I don't know, in this case, what else works, maybe blockchain to some extent. But are you working on technology to make the experience more seamless? For example,
why don't you have the Uber? क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं कभी कभार फ़ोन करता हूँ ना तो राइडर कहता है यार हुआ पता क्या था, वो KFC वाले जी दे नहीं रहते थे. KFC नहीं कहना चाहिए, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट द आइडिया बीइंग देयर आल्सो आवर कस्टमर्स. लेकिन हाँ, we stand for all our restaurant लेट्स गो. मैं ये कह रहा था कि होता क्या है कि वो एक ब्लेम गेम होती है, राइट. आई जस्ट वांट टू बी एबल टू सी, राइट. आई जस्ट वांट टू सी माय राइडर. वो आप लिखा तो आता है 15 to 25 minutes, 5 to 10 minutes, बट व्हाई कांट आई जस्ट सी देम. और उसी तरीके से आपने बात की ना सॉफ्टवेयर से यू कैन टेल कि पाकिस्तान DHA में क्यों बोला जा रहा था. सो दैट्स क्लियरली यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स. उसी तरीके से व्हाई कांट फॉर एग्जांपल लाइक इफ समथिंग की वर्ड गोज रॉन्ग, कॉल गोज ऑटोमेटिकली, मतलब आर यू, is there a focus on technology because you're a tech company, and what are those things that are happening in that domain for you guys? ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग. अच्छा, पहली बात तो ये कि विद रिस्पेक्ट टू आवर राइडर्स लोकेशन, नाउ यू कैन ट्रैक दैट ऑन आवर ऐप एज वेल. सो यू वुड सी दैट पाव मैस्कॉट ओवर देयर एंड ही वुड बी मूविंग अराउंड, और वो पूरा पाथ भी एक ब्लू लाइन में पाथ बन के आ रहा होता है कि वेयर इज ही राइट नाउ. सो वंस ही हैज पिक्ड अप योर ऑर्डर, देन द पाथ इज विजिबल टू द कस्टमर when the rider is on the way. So वो जो customer की expectation management या anxiety management जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो we do that. Also, if an order gets late during the course while the rider is on the way, हमारा जो last page है जिसको हम OTP या order tracking page बोलते हैं, वहाँ पर कभी-कभी एक info icon भी बन करके आ जाता है, and that says that sorry your order is late, and then your new ETA is that. So that's also when the system or जो tech की बात करें, system detects that there's something has happened. ये automatically होता है. This is all automatic. So the system now detects that there's some issue, and now the new ETA will be that. The issue can be due to the traffic on the roads, or maybe our restaurant partner took some additional time to prepare that food. तो वो जहाँ पे वो lag आया, वो automatically अगले जो chain है उसके अंदर वो lag वो add होगा. So this is what happens. जो आप further technology की जो आप बात करें, we already know that, for example, from a consumer experience perspective, which of the issues are more critical for our customers as opposed to some of the issues which can be better managed. और वो उसकी severity levels हमारे पास होते हैं, and literally the term we use is severity level. So we know that that this issue क्या है और issue का भी severity level क्या है, और उसका action और उसके standard operating procedures भी उस severity level के हिसाब से ही होते हैं. So अगर एक order 5 मिनट late हो गया है, वो सिविरिटी लेवल इतना नहीं है जितना 15 मिनट या 20 मिनट लेट हो गया, फॉर एग्जांपल. सो दैट्स आल्सो हैपेंस. एंड देन व्हाट जो आप एजेंट पेयरिंग के हवाले से आपने बात की थी, दैट्स ऑलरेडी देयर. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव पेड वाया online payment method, you're going to speak to a support representative who is expert in that, as opposed to somebody who has placed via cash. Makes sense. Okay. Similarly, if you have an issue, बट इसमें तो कैवियट ये है कि कस्टमर जब चैट कनेक्ट कर होते हैं ना, तो वो राइट इशू जरूर सेलेक्ट करें. सो इफ दे डोंट सेलेक्ट द राइट इशू, देन इट विल टेक सम टाइम फॉर आवर सपोर्ट एजेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द इशू. बट इफ यू, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सेलेक्टेड दैट यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर लाइव ऑर्डर इन द प्रोसेस राइट नाउ, you are going to speak to a representative that is specialized only for जो इस्लामाबाद में होगा. Let's say I've ordered in Islamabad, इस तरह. And what about the restaurant? How aware is the restaurant in all of this? So restaurant in what sense में आप थोड़ा explain करें? In the sense कि like assuming कि एक restaurant है and the problem is with the food. आपने बताया stale pizza का आपने example दिया. मैंने तस्वीर भेजी कि यार pizza stale है. I don't know how you take a picture. खैर मेरे खाने में कॉकरोच है यार, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मैंने आपको तस्वीर भेजी कॉकरोच है खाने में. हाउ do you then instantaneously send that to the restaurant as well, or is that something, I mean, how involved is the restaurant in this tech process, or okay. So and restaurant is equally involved. The moment we review a customer's claim about that and we find that there is merit in that claim, while we take care of the customer's interest, that very second, that very moment, the restaurant is also intimated that this is something that we have received from XYZ customer, let's say Shayan ने मुझे भेजा है, or we feel that Shayan's claim is valid, and while we are refunding, for example, if the customer said कि मुझे तो खाना, मुझे पैसे वापस दो and all that, while we are refunding this amount to the customer, we that very moment, that very microsecond, वो इंटीमेशन जाती है उस रेस्टोरेंट के साथ. तो एक तो वो ये है हर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे इंटीमेशन, एंड देन वी वर्क विद द रेस्टोरेंट्स
on a day, at times even twice a week, and usually on a weekly level, telling them that, you know, what were the problems, and then we portray it to them as a lost opportunity. Right. तो फॉर एग्जाम्पल वो अगर एक रेस्टोरेंट ने 1000 ऑर्डर किए फूड पैंडा से और 10 में कोई मसला निकला, तो वो 10 लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी. सो हाउ, एंड देन वी टेल देम दैट, यू नो, इफ़ यू फिगर दिस आउट, दैट व्हाट हैपेंड, and figure this out and what went wrong, then वो आपका बिजनेस है, और उससे उनके लिए बिजनेस है, हमारे लिए भी बिजनेस है, and of course the interest of customer is safeguarded. So that's what we do. और then जो हमारी commercial and key account management teams होती हैं, they have regular engagement, and this is where the customer experience team works with the key account managers to tell them that क्या है इशू किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का, चाहे वो बहुत बड़ी कोई चेन है, इंटरनेशनल चेन्स, या वो एक आपका लोकल रेस्टोरेंट है कोई भी, बट टेलिंग देम दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व फॉर, एंड देन वी इंगेज एंड वी ट्राई टू गेट द रेस्टोरेंट वर्जन. इफ इट नीड्स अ विजिट टू बी डन ऑफ देयर किचन और एनीथिंग लाइक दैट, दैट्स ऑल्सो वी डू. So And who visits the kitchen? Some sort of a specialist or who yeah, so that both. So basically हमारे पास teams होती हैं, onboarding के अलग अलग teams हैं that are taking care of all of these things. मतलब health का वो checks, Yeah, violations, बिल्कुल, etc. for sure. और इसके अलावा जो कि अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, वो तो रेगुलर एंगेजमेंट रख ही रहे होते हैं. सो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस is there, then there is regular checks. हमारी तरफ से भी कस्टमर का जो डेटा पॉइंट्स सारे आ रहे होते हैं, फीडबैक है, कस्टमर के वर्बेटिम्स हैं, कस्टमर ने कहीं पोस्ट कर दिया किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर से, कलेक्टिवली जो रेस्टोरेंट कैसे अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ कस्टमर्स, वो हो रहा होता है बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली. अच्छा, I have a question. In the sort of vast country that is Pakistan, मैं लोगों से हमेशा डिस्कस कर रहा हूँ, दिल भी लाइक, UAE में बड़ा सीमलेस है. UAE छोटा सा भी तो बहुत है ना. दुबई इज़ स्मॉलर एंड आई मीन ऑफ कोर्स मार्केट साइज वैल्यू वाइज इज़ डिफरेंट, बट पाकिस्तान जियोग्राफिकली बिग. सो फॉर एग्जांपल डिलीवरिंग इन कराची एंड डिलीवरिंग इन इस्लामाबाद जो छोटा है, 5 किलोमीटर रेडियस से कुछ हद तक तो वो हो जाता है. फिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल द स्किल्ड labor and then the kinds of restaurants. I imagine जो आप rural Pakistan में, you're in cities as well now. Yeah. Semi-urban Pakistan and then urban Pakistan, right? So the quality of a restaurant in Karachi might be higher than the quality of a restaurant in, say, Islamabad or in a tertiary second city. Do you face more complaints in certain parts geographically than you do? You must have some data on this, right? Yeah, we do. Is it like कि यार कराची क्योंकि बहुत बड़ा है और one end to another, वो तो आप आई गेस 5 किलोमीटर से कवर करते हैं, या अर्बन पार्ट्स में कम कंप्लेंट्स आती हैं? बिकॉज सम ऑफ दैट्स नॉट अप टू यू ना. इकोसिस्टम इज़ द इकोसिस्टम जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं. अगर एक रूरल पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, स्किल्ड वर्कफोर्स कम है, रेस्टोरेंट की क्वालिटी, मतलब रेस्टोरेंट्स मेकिंग मोर मिस्टेक्स बिकॉज दे रिलेटिवली न्यूअर, डज दैट हैपन? इज इट जियोग्राफिकल? So basically अगर मैं on the larger horizon देखूं, I think the percentage ratio of from any territory as a complaints ratio to order ratio is more or less the same. कोई बहुत major anomaly नहीं नज़र आती हमें कोई. अगर कोई specific incident कहीं हो गया, for example आजकल कराची में बहुत सारे, DHA कराची is an example, roads are dug up. Literally people are driving on sand dunes. क्या करें? So अब उस time के ऊपर if there is a delay happening and so percentage of complaints have risen, so that's something that we know. And that is something that is beyond our scope. जैसे ना बारिश हो जाती है. अब बारिश हो जाती है, अब जैसे we are at the start of the monsoon period, अब बारिश जिस दिन हो गई है, so उस दिन there's a problem. But जहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर शहरों में इतना कोई बहुत ज़बरदस्त शायद ना हो जहाँ पर हम बाइक चला सकें और कोई राइडर सेफ्टी का मसला नहीं, तो फिर हमें वहाँ पे ऑपरेशंस हॉल्ट भी समटाइम्स करने पड़ते हैं. या अगर हम इतनी बुरी बारिश नहीं भी हुई, हम ऑपरेशंस कंटिन्यू रख भी सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू इंश्योर द राइडर सेफ्टी एंड वी इंश्योर एंड वी आस्क देम टू ड्राइव स्लो एंड वी उस टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है कि ऑर्डर लेट हो जाए. तो वहाँ कंप्लेंट्स आती हैं और वहाँ पर फिर हम कस्टमर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देयर इज अ सर्टेन सिचुएशन एट हैंड राइट नाउ, वी एक्सपेक्ट वी रिक्वेस्ट फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. समटाइम्स इफ यू ओपन आवर ऐप ऑन ईद डेज, हाई डिमांड डेज, हमारे पास ये बैनर्स भी लगे हुए होते हैं वेयर बाय वी प्रोएक्टिवली टेल आवर कस्टमर्स. बट कोई बहुत मेजर एनॉमली नहीं है. However, one thing I want to say कि in Pakistan in general, if you आपने बाहर की एग्जांपल दी थी, बाहर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके डिलीवरी ऑप्टिमाइज्ड किचन्स होते हैं. So what does that mean? What does that mean? For example, उनके पास अगर 4 स्टव्स हैं तो 2 अगर उनका स्टव है that is going to serve for dine-in customer, तो 2 स्टव्स हैं जो डेडिकेटेड for
फॉर डिलीवरी ऑर्डर्स हैं, और उसका पाथ इस तरह से होगा कि उसकी राइडर के लिए पिकअप करने की विंडो अलग होगी, उसका पूरा एक उसका वेटिंग एरिया होगा जहाँ पर राइडर्स जो है वो रिस्पेक्टफुली वेट कर सकते हैं. वो पूरी जर्नी के लिए वो ऑप्टिमाइज है. पाकिस्तान इज़ नॉट देयर येट. इवन लार्जर चेन्स के जो किचन्स हैं वो भी उनमें सारे अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे. तो उस वजह से होता फिर क्या है कि हमारा राइडर एक्सपीरियंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि राइडर्स की क्यू लगी हुई है, वो ऑर्डर्स के लिए वेट कर रहा है. जब राइडर वेट कर रहा है बाहर तो वो खाना लेट हो रहा है, तो हमारा कस्टमर भी सफ़र कर रहा होता है. सो दैट ऑल्सो एज पार्ट ऑफ अ मार्केट अभी वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ हाउ डज द फूड टेक बिजनेस बिकम्स ऑप्टिमाइज फॉर डिलीवरी एज वेल. सो ये भी एक बात है. चलें सर, देन लेट्स मूव ऑन टू द $1 million क्वेश्चन. क्यों होता है लेट हमारा खाना फूड पैंडा पे? अच्छा, मैं आपको एक मज़े की एक बात बताऊँ. I was doing just last week a redesign of our contact center, help center, जो हमारा self-service help center है. There can be 804 possible reasons why something can go wrong in an order. 804. 804. Yes. So for example, आपका कैश का ऑर्डर है, आपके इसमें मसला हुआ, ऑनलाइन ऑर्डर है, ये मसला हुआ, मैं इस तरह करके बोल रहा हूँ. अच्छा, लेट हुआ तो बारिश हो रही है, इस तरह की भी चीजें फैक्टर इन करती हैं? नहीं, वो नहीं कर रहा मैं. अच्छा, 804 इंटरनल एज इन देयर आर. This is scenarios. This is what our team has basically predicted. Okay. ठीक है. 804. So for example, you have paid via cash. कैश में आपके आधे ऑर्डर में मसला है, दैट्स वन सिनेरियो. यू हैव पेड वाया कैश, आपके पूरे ऑर्डर में मसला है, दैट्स अनदर सिनेरियो. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर आर 804 पॉसिबल सिचुएशंस वेयर बाय समथिंग कैन गो रॉन्ग. और वो खाना क्यों लेट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मोटे बहुत ऊपर से रीज़न बताऊंगा. खाना इसलिए लेट हो सकता है, पहले मैं आपको आइडियल जर्नी बताता हूँ, ठीक है, और फिर उसमें आप यू कैन यूज़ योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस टू सी के माय इमेजिनेशन के क्या हो सकता है. बिल्कुल. तो आइडियली तो होता है ये कि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, उसको ऑप्शन उसने सेलेक्ट कर ली, उनको लेट्स से एक लार्ज पिज़्ज़ा और एक पैन पिज़्ज़ा मंगवाना था, आपने ऑर्डर कर दिया. ऑर्डर जब वो होता है तो वो रिंग होता है रेस्टोरेंट के पास. मीनवाइल द एल्गोरिथम इज़ लुकिंग फॉर अ राइडर. रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया. 10 मिनट का टाइम था लेट से प्रिपेयर करने के लिए. 10 मिनट पे खाना रेडी हुआ. 9.5 मिनट के ऊपर राइडर भी उनके पास पहुंच गया. राइडर ने खाना हमारे पिक किया. 3-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद पिक करने के बाद खाना पहुंच गया कस्टमर के घर के ऊपर. दिस इज़ एन आइडियल जर्नी, राइट. बट इसमें आप ये देखें, इसमें अब आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें. व्हाट कुड गो रॉन्ग? रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट ही लेट किया, ठीक है, उसमें भी हमने टाइम, वो टैब नहीं सही तरह देखा, टैब नहीं देखा, ऑर्डर मिस कर दिया. उनके पास रिंग, उनको आवाज़ ही नहीं उनके कान में आई, वो रिंग हुआ. हालांकि जो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, बहुत ही हमारी रिंगिंग जो है बहुत ही वाइब्रेंट सी उसकी आवाज़ है. बट जस्ट सेइंग आउट लाउड. सो अगर वो उन्होंने मिस कर दिया, दैट्स वन सिनेरियो. ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि रेस्टोरेंट ने मिस कर दिया. सेकेंड थिंग, रेस्टोरेंट ने ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू किया, दे हैड रैन आउट ऑफ स्टॉक. दे डिडंट रियलाइज दैट इज समथिंग नॉट ओवर देयर. रेस्टोरेंट ने ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू किया. दैट्स अ प्रॉब्लम वी रियली फेस पर्टिकुलरली इन विंटर्स. गैस का मसला हो गया, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया. या रेस्टोरेंट के पास डाइन इन कस्टमर्स की एक्सेप्शनल लोड आ गया और उसी टाइम के ऊपर उसके पास हमारी तरफ से भी ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिले. सो अभी तो मैं बहुत स्क्रैचिंग द सरफेस सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें आई रिमेंबर, मैंने एक दफ़ा आपकी प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर किया था, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, एंड द राइडर वाज ब्रिंगिंग माय कॉफ़ी एंड एवरीथिंग वाज फाइन. बारिश हो रही थी थोड़ी सी, वो इस तरह स्लिप हुआ मेरे सामने. एक्चुअली इत्तफाकन मैं बाहर खड़ा हुआ था, स्लिप हुए, बाइक उसकी पलटी है, कॉफ़ी मेरी, मतलब 4 कॉफ़ियाँ थी, चारों बाहर ज़मीन पे गिरी हैं. अब आई सॉ दैट हैपन. हैड आई नॉट सीन दैट हैपन ना, एंड आई हैड बीन इनसाइड, मैं वैसे ही बाहर खड़ा होता टॉकिंग टू समवन, एंड आई सॉ द बेचारा राइडर, ही फेल एंड ही एक्चुअली कट हिमसेल्फ एंड इट वाज क्वाइट बैड. एंड आई वाज लाइक, यार तू पैसे रख ले, इट्स फाइन, इट्स व्हाटएवर. बट द पॉइंट इज क्या, वो दैट इज एवरीथिंग गोज परफेक्टली फाइन, ही इज ऑलरेडी डन एवरीथिंग, एंड देन ही स्लिप्स ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट हिज फॉल्ट, एंड there goes 4 coffees, and a lot of people will not understand कि भाई that's just human, right? That's just human, and that rider would have spent a lot of literally वो last ditch effort उसने की होगी उसको बचाने के लिए, but he was not. No, it was just life, right? That happens. Exactly. उसमें ना रेस्टोरेंट की गलती है, ना उस पर्टिकुलर राइडर की गलती, ना आपकी गलती है, ना हमारी गलती है, कस्टमर की भी कोई गलती नहीं है, ऑफ कोर्स. लेकिन वो एक सिचुएशन है, अब वो आ गई, और हमारा बिजनेस ऐसा है कि इट हैज hundreds and thousands of transactions happening every day.
सो रेस्टोरेंट साइड पे मैंने आपको अब ये बताई. राइडर साइड पर हो सकता है कि राइडर जो है वो उसकी बाइक में कोई मसला हो गया, वो 5 मिनट लेट पहुंचा, ट्रैफिक इज सच अ बिग प्रॉब्लम, उसके बाद उसको कोई घर से कोई इमरजेंसी कॉल आ गई. राइडर इज ऑल्सो ह्यूमन एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड टू मे बी एंड हिज शिफ्ट and go to his home. So these are and then once he ends his shift and then the system will try to find another rider to assign. So उसमें ये सारे lags आएंगे. और उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचा भी रेस्टोरेंट के ऊपर पहुँच भी गया वो, तो रेस्टोरेंट ने somehow जो है वो उसने बोला यार थोड़ा वेट कर लो, मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा हैं. वो रेस्टोरेंट की कोई पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन वो बोलेगा यार मेरा डाइनिंग का कस्टमर ये खड़ा हुआ है, ये मेरा बहुत लॉयल कस्टमर है, ये रोज़ाना आता है मेरे पास, तो पहले मैं जल्दी से उसका प्रिपेयर कर दूँ, तो एडिशनल 2-3 मिनट का लैग वहाँ पर आ गया. सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट कैन हैपन इन एनी ऑर्डर. और उसमें फिर ऑर्डर and a lot of it is not in your hands as well, right? You facilitate the restaurant, you facilitate the rider, लेकिन obviously एक पॉइंट के अंदर there are human errors, there are other problems, मतलब it's a whole world. देखिए फूड पैंडा जो है ना वो एक यूनिक फिनोमेना है 3-वे मार्केट प्लेस का. कोई और कंपनी पाकिस्तान में 3-वे मार्केट प्लेस क्रिएट नहीं कर रही है. तो हम और वो सब तीनों मैं सॉरी आपसे एक सवाल, आपने अच्छी पॉइंट रेज किया, that kind of clicked with something. Do you face the same amount of concerns and back end मतलब complaints के लिए on Pandamart as you do, because you control the dark stores to a large extent, right? Is the complaint ratio similar or less? I think the complaint ratio is definitely lesser because over there we have better controls. We have better controls, but nothing is perfect, right? Or customer expectations we at every time they are increasing. But with Pandamart, of course, हमारे पास control ज़्यादा होता है. Exactly. We can if something there is a need for improvement, we can improvise and fix it earlier. But also need to understand is कि जो Pandamart के operations हैं वो बहुत ज़्यादा complex है as opposed to a restaurant. Because एक restaurant में 15, 20, 50 dishes का menu होगा और एक Pandamart में assortment of the SKUs is in thousands. So वहाँ पर आपका जो है वो assortment of 1000 और उसमें से किसी एक assortment किसी एक SKU में छोटा सा भी मसला हो गया और उस customer के पास वो चला गया. So what I want to really stress is कि what we sometimes see on social media is a very 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 small percentage. दिन के कोई 5, 6, 10, 12 orders maximum जो हैं वो ख़राब किसी के हो गए, and because of and at the scale you're working at, that's what I'm talking about. 1%, 2% of the overall orders and the hundreds and thousands of orders that we are doing on a daily basis. So वो अगर उसमें से जो है वो हो जाता है, and that is going to be there. So उसमें that's not an excuse. But what I want to say is that this is where we need to improve, and this is where we constantly strive to improve and fix things. अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा हमें टाइम दिया. Firstly, I want to thank you for that. I want to ask you one last question, and just to understand, because I think इससे मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है. मैं छोटा होता था तो एक ज़माने में डोमिनोज़ खुला था, तो डोमिनोज़ की वो बड़ी फेमस चीज़ थी 30 minutes या फ्री, एंड आई लव दैट, क्योंकि मैं ऑर्डर करता था और फिर बैठ जाता था घड़ी के सामने के फ्री फूड अल्लाह करे ये बंदा लेट हो जाए ना. और कराची में आई वुड गो फॉर द समर्स एंड और वो हमेशा समहाउ ना पहुंच जाता था, एंड आई रियली पिस्ड ऑफ हैविंग टू पे हिम. एंड टू डेट आई नेवर अंडरस्टूड कि यार वो उस ज़माने में 30 मिनट्स फ्री कर रहे थे, कैसे करते थे. इज दैट बिकॉज दे कंट्रोल द एंटायर चेन? नाउ दैट आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू मे बी आई एम थिंकिंग दैट वाज द रीज़न. And if that's not the reason, and there are certain fast food restaurants you could do this with, why doesn't foodpanda do it? So एक चीज़ तो ये कि while we do not have a direct control, but the systems that we have built is that we enforce that control. So आप जिस delivery time की आप specific pizza chain की बात कर रहे हैं, हमारे orders उससे कम average हम उससे कम ही time पर deliver कर रहे होते हैं. That I can tell you, right, on an average level. So that how we have done that. We have done that by fixing everything from an order acceptance to order preparation to the rider going to the restaurant location, and then from restaurant location to customer location. Hence the radius की लिमिटेशन के 5 किलोमीटर के अंदर, समथिंग लाइक दैट. सो हमारा गोल भी यही होता है, और बाय लार्ज हम जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उसी के अंदर हम डिलीवर कर रहे हैं. बट इट्स वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिज्ज़ा चेन है उसका फूड कुजीन एक ही तरह का है, बट वी हैव अ फूड कुजीन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल टाइप्स. सो फॉर एग्जांपल अगर स्टेक है वो 30 मिनट्स में रेडी आ ही नहीं सकता, राइट. सो इसलिए हर ऑर्डर का टाइम डिफरेंट होगा. बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स दैट वी आर डिलीवरिंग ऑन टाइम, एज लॉन्ग एज, एंड दिस इज समथिंग दैट
we track on a very religious basis that what is the percentage of orders that are on time delivered. As long as that's happening, और आप टाइम डिलीवर करने के लिए सेक्शन, सो फॉर एग्जांपल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया ना, स्टेक, राइट, कोई चीज़ें हैं जो टेक लॉन्गर. Yeah. सो हैव यू सेट अ प्री रिक्विजिट टाइम कि यार ये वाला जो खाना है 45 मिनट्स में आना चाहिए, पिज्ज़ा है तो 25 मिनट में आना चाहिए. डू यू हैव डिफरेंट टाइम लाइन्स दैट यू like associated to different kinds of food? Yeah, that is true. और उसमें so we work with the restaurants as well as हमारे अपने ML algorithms and machine learning algorithms जो हमें एक बता देते हैं कि इस रेस्टोरेंट का एवरेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अंडर कमिट कर दिया ना टाइम के मैं 5 मिनट में बता दूंगा, तो आफ्टर अ वीक्स बना लूंगा खाना. आफ्टर अ वीक्स परफॉर्मेंस द ML मॉडल इज गोइंग टू से कि नो, एक्चुअली यू कांट. And then you आपका जो टाइम है ना वो 8 minutes है. So then we will work with the restaurants that to tell them that either sir please improve on the time because the commitment that you made was 5 minutes, or if you cannot, we show a realistic picture to them, then let's upgrade the time so that we show the right time to the consumers so From that rider का भी wait ना हो वहाँ पर और consumer का भी experience ख़राब नहीं हो. जो टाइम हमने उसको कमिट किया है हम उसी के अंदर उसको डिलीवर करें. ठीक है, चलें यार, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो डीमिस्टिफाई आपने किए हमारे लिए, क्योंकि हमें अक्सर इस तरह के कंसर्न्स आते रहते हैं ना, आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज वेल, अबाउट हो क्या रहा होता है, क्यों लेट हो रहा होता है, वेयर द इश्यूज आर, राइट. खैर, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज अ प्लेजर. Thank you guys for watching. If you enjoy the content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.